Sage Vyasa wanted to write the Mahabharata, the greatest epic ever told. But he needed someone who could write as fast as he spoke. So he called upon Lord Ganesha. Ganesha agreed on one condition: you must not stop while reciting. Vyasa smiled. Then you must understand every verse before writing. As Vyasa began to chant, Ganesha started writing swiftly with divine focus. The sound of his pen echoed through the cave. Suddenly, Ganesha's pen broke, but he did not stop writing. Without hesitation, Ganesha broke off one of his tusks to keep his promise. He dipped his tusk in ink and continued writing, completing the Mahabharata without a pause. And thus, Lord Ganesha completed the great Mahabharata. His broken tusk became a symbol of sacrifice and wisdom. Sage Vyasa wanted to write the Mahabharata, the greatest epic ever told. But he needed someone who could write as fast as he spoke. So he called upon Lord Ganesha. Ganesha agreed on one condition. गणेश और कुबेर का अनंत भोज। बहुत समय पहले अलकापुरी के चमकते नगर में एक ऐसा महल खड़ा था जो पूरी तरह सोने से बना था। वह महल था कुबेर का, धन के देवता और अहंकार के भी। महल का हर कक्ष चमकता था, हर कमरा खजानों से भरा था, और धीरे धीरे कुबेर को विश्वास होने लगा कि तीनों लोकों में उनसे धनी कोई नहीं। अपना वैभव दिखाने के लिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक विशाल भोज का निमंत्रण दिया। पर शिव और पार्वती बस मुस्कुराए और किसी और को भेज दिया। उन्होंने भेजा बाल रूप में गणेश को। कुबेर ने गणेश को देखा और हल्का सा हंस दिया। एक बच्चा, उन्होंने सोचा, ये तो मुश्किल से 2 लड्डू खाएगा। पर वो जो पाठ सीखने वाले थे, जो वो कभी नहीं भूले। गणेश जी लंबे राजसी भोजन टेबल पर बैठे, आंखें बंद कीं और खाना शुरू किया। उन्होंने मिठाइयाँ खा लीं, फलों की थालियाँ खा लीं, सब्जियाँ, व्यंजन, पूरा भोज खत्म कर दिया। लेकिन वे रुके नहीं। वे रसोई में गए, हर बर्तन, हर पका हुआ भोजन समाप्त कर दिया। और फिर कुबेर का सोना, उसका धन, उसकी सजावट सब खाने लगे। कुबेर घबरा गए। उनका महल, उनका खजाना सब पलक झपकते गायब हो रहा था। उन्हें समझ आ गया, ये भूख नहीं थी, ये संदेश था। वो कांपती आवाज में माता पार्वती के पास पहुंचे। माते, कृपा करके बताइए, गणेश को कैसे शांत करूं? माता पार्वती ने मुस्कुराकर एक छोटा सा कटोरा उठाया, जिसमें बस थोड़े से चावल थे। ये अर्पित करो, उन्होंने कहा, अहंकार से नहीं, सच्चे प्रेम से। कुबेर वापस लौटे, हृदय विनम्र, अहंकार मिट चुका था। उन्होंने कटोरा गणेश जी के सामने रखा, पूरे समर्पण के साथ। गणेश जी मुस्कुराए, एक दाना उठाया और कहा, अब मैं संतुष्ट हूं। जिस हृदय में अहंकार भरा हो, वह कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन विनम्र हृदय हमेशा भरा रहता है। Ganesha and Kubera's endless feast. Long ago, in the glowing city of Alakapuri,
stood a palace made of pure gold. It belonged to Kubera, the god of wealth, and the god of pride. Every hall glittered, every room overflowed with treasure. And slowly, Kubera began to believe that no one in the three worlds was richer than him. Wanting to show off, he invited Lord Shiva and Goddess Parvati for a grand feast. But they simply smiled and sent someone else. They sent little Ganesha. Kubera looked at Ganesha and laughed gently. "A child," he thought. "He will barely eat anything." But he was about to learn a lesson he would never forget. Ganesha sat down at the long royal table, closed his eyes, and began to eat. He ate the sweets, the fruits, the vegetables, then the entire feast. But he didn't stop there. He moved to the kitchen, finished every pot of food, and then he began eating Kubera's gold and treasure. Kubera panicked. His palace, his wealth, everything was disappearing in moments. He finally understood. This wasn't hunger. This was a message. So he ran to Goddess Parvati, his voice trembling. "Mother, please, tell me how to satisfy Ganesha." Parvati smiled gently. She handed him a simple bowl of rice. "Offer this," she said, "not with pride, but with love." Kubera returned to Ganesha, his heart humbled, his ego gone. He placed the small bowl before him with true devotion. Ganesha smiled softly, took a single grain, and said, "Now, I am satisfied." A proud heart is never full, but a humble heart